Assalamu alaikum. Today's lecture from SICO is going to be on work power and energy और इसके अंदर हम बात करेंगे about work done, law of conservation of energy power and the different types of energies, namely gravitational potential energy and the kinetic energy of a body. So start करते हैं with work done और with talking about what work done is. अच्छा, work is done when an object is moved over a distance by an external force in the direction of the force. By an external force in its direction. Work done को हम W से डिनोट करते हैं और इसके अंदर जो दो चीज़ें हैं they are force and the displacement. Work done का ऐसा यूनिट होता है जूल्स. एक और चीज़ जिसका ऐसा यूनिट जूल्स होता है it is energy, and so energy and work done are synonymous और हम आगे देखेंगे कैसे. This is force in Newton, this is displacement in meters. For example, there's this trolley or there's this human being who's trying to push this trolley into the forward direction. If the trolley moves 5 meters in this direction with a force of 15 Newton, so agar hame work done find karna hai, we will use this formula and this is how we will find the work done, which would be equals to 75 joules. Good. Now, let's see how. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि हमें डिस्कस करनी चाहिए वो ये कि in its direction work is only done when the object will move in the direction of the external force applied. For example, अगर ये एक ब्लॉक है और ये एक हैंडल लगा हुआ है and this man is desperately trying to move it up, but it does not move up, so even though he would be using a lot of energy, but since वो object move नहीं कर रहा है, no work is done. No work is done. Next thing is the principle of conservation of energy. Simple terms में अगर बात करें तो ये कहता है कि energy can neither be created nor destroyed. मतलब ये कि ना आप एनर्जी को बना सकते हैं और ना अगर एक सिस्टम में एनर्जी है तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. However, energy can be converted from one form to another form. For example, अगर एक गाड़ी एक रोड पर मूव कर रही है and there's a lot of friction force, तो फ्रिक्शन की वजह से its kinetic energy would be converted into heat energy. और अगर ज़्यादा से ब्रेक मारते हैं and tires grip against the road, तो that could also convert into noise और sound energy. अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था उसका मतलब था कि टोटल मोमेंटम रिमेन सेम. इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें यह बताता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ क्लोज सिस्टम इज कांस्टेंट. ठीक है, तो अगर एक सिस्टम में 5000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी है, उस सिस्टम में आफ्टर डूइंग सम वर्क भी 5000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी ही होगी. फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो स्टार्ट में उसके पास ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी और जैसे वो गिरना स्टार्ट करेगा तो उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी वुड कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी. यस, हाउएवर द टोटल एनर्जी वुड स्टिल बी द सेम. ये वो ग्राफ है. The total energy would still be the same. This is the potential energy and this is the kinetic energy. हम ये देखते हैं कि total energy same रहेगी.
पोटेंशियल और डिफरेंट एनर्जी चेंज करेंगी, बट दैट वुड नॉट अफेक्ट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। काफी एग्जांपल्स हैं इसके अंदर, हम देख सकते हैं। इसके अंदर लाइट बल्ब की एग्जांपल है, वेयर एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू light or heat in case of a filament lamp. Loudspeaker के case में it's converted from electrical to sound. Now let's talk about the efficiency of a system. और efficiency होती क्या है? अब हमने बात की कि electrical energy is converted to heat energy. Efficiency हमें ये बताती है कि कितनी परसेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो अगर हम एफिशिएंसी के फॉर्मूला में बात करें तो दैट वुड मीन यूजफुल आउटपुट एनर्जी over the total input energy, which in the case of a light bulb would be, the input would be, total input is equals to electrical and the output is, let's say, heat. तो अगर हमने निकालना कि ये बल्ब कितना एफिशिएंट है, कितना एफिशिएंटली हम इसको एनर्जी देते हैं, उसमें से कितनी ये यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वी वुड यूज दिस रेशियो। और अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल गिव अस द एफिशिएंसी ऑफ आवर सिस्टम। सो दैट्स इट अबाउट एफिशिएंसी। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन, इसकी एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, टोटल एनर्जी दैट वाज गिवन इनटू अ सिस्टम वाज लेट्स से 5000 न्यूटन्स, and out of the total energy the output heat is equals to 200 newtons. So calculate the efficiency. Calculate the efficiency. How would you do that? We would use output over input into 100. This would give us an efficiency of only 4%. तो इसका मतलब ये कि हमारी मशीन ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो जब हम एफिशिएंसी और एनर्जी की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम पावर की भी बात कर लें। लेट्स सी व्हाट पावर इज। एक बहुत कॉमन वर्ड है, अगर हम किसी रेसलर के बारे में बात करते हैं हम अक्सर बोलते हैं कि इस रेसलर की पावर क्या है, क्या मशीन्स के अंदर में बात करें तो मशीन की पावर क्या है। Power is basically just the rate of conversion of energy from one form to another. अगर हम एक मशीन की बात कर रहे हैं, it would be the rate, एक बल्ब की अगर हम एग्जांपल ले लें कि इस बल्ब की क्या पावर है, it would be the rate at which it converts energy from one form to another. अब इसके अंदर रेट आ गया तो ऑब्वियसली हमें पता है कि टाइम आ रहा होगा और हमारे पास एनर्जी भी है। तो ये है पावर का फॉर्मूला। पावर का ऐसा यूनिट इज वॉट्स, जो कि एक फेमस साइंटिस्ट के नेम के ऊपर रखा गया है। पावर की एक और भी डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि वर्क एंड एनर्जी आर सिनोनिमस एंड बेसिकली द सेम थिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। तो अगर ये भी डेफिनेशन यूज की जा सकती है तो दिस आल्सो डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल, a car exerts a force of, एक कार है एग्जांपल ले लें, and it exerts a force of 500 Newton in the forward direction for a distance of 1 kilometer for a time of 200 seconds. Calculate power. तो हमने क्या बात की जी, पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। एनर्जी इज W, तो हम इसको W ओवर टाइम भी लिख सकते हैं। हमारे पास टाइम है 200 सेकेंड्स, हमारे पास W नहीं है। W का हमने फॉर्मूला देखा था F इंटू डी, हमारे पास D भी है, हमारे पास F भी है। वी वुड डू दिस 500 इंटू 1000, ब्रिंग इट इंटू SI यूनिट। बहुत ज़रूरी है, कभी भी कोई चीज़ आउट ऑफ SI यूनिट हो तो उसको कन्वर्ट करना है। 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं।
divided by the total time. This would give us our answer 2.5 kilowatt. Kilo is used for 10 power 3. या आप पहले टॉपिक में पढ़ चुके होंगे conversions. So this is how we use power and efficiency and anything with regards to work done. Now let's talk about the different types of energy, namely GPE, which is the gravitational potential energy, and the kinetic energy. Definition देख लेते हैं. It is the energy that is stored in a system, or about that is stored in a body due to its position above a reference point. Reference point अमूमन हम ग्राउंड को लेते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्राउंड एंड वी हमने जानना है कि इस बॉल के अंदर कितनी ग्रेविटेशनल एनर्जी है, तो हम फार्मूला जो हम देखेंगे उससे निकाल सकते हैं. So the formula that we use for calculating GPE is this mgh. ये mass है. G is gravitational acceleration, which is 9.81, and h is the height of that ball above the ground. For example, calculate the GPE of a ball of mass 100 kg above 10 meter from ground. तो बड़ा easy है जी. फॉर्मूला यूज करेंगे. 9.81 into 10 करें तो हमारे पास GPE आ जाएगी. Next, talk about kinetic energy. Or kinetic energy is the energy of an object due to its motion. तो अगर कोई भी मूविंग बॉडी है उसके अंदर kinetic energy, for example अगर ये बॉल स्टेशनरी है तो it has gravitational potential energy GPE, but when it falls to the ground the gravitational potential energy converts into kinetic energy until it is maximum just before it hits the ground over here. So इधर भी हमने देखा कि एनर्जी कन्वर्जन होती है. kinetic energy भी एनर्जी है तो जूल में होगी. The formula that we use for it is this 1/2 mv square. We will also look at the derivation of this formula in some of the later videos, but let's talk about what these values are. 1/2 half mv square. M is the mass, v is the velocity of the body, of the moving body. This is a formula that gives us the kinetic energy. For example, a car of mass 100 kgs is moving with a velocity of 25 in the forward direction. Calculate its kinetic energy. तो बड़ा इजी है जी. इसके अंदर हम फार्मूला में के फार्मूला में यूनिट्स पुट करेंगे. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. स्क्वायर लगाएं. याद रखें स्क्वायर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. और the value that the calculator gives us is this joules. यूनिट लगाना हमेशा याद रखें. It's the most important thing in your calculations. So this is it for today's topic. We talked about work done, we talked about power, and we talked about the types of energy.